Hi, I'm Akshay Kumar and I'm glad to be a part of workshop conducted by Guvi recently. Here, I came to know about the most useful technologies and also different data structures of Python. I also learned a lot about training and testing the models, which involves a major part of deep learning and machine learning. At last, we created a very meaningful project where we trained a model by providing a large data sets of images to train a model that was further trained to recognize if a person is wearing a mask or not. That is very useful during these pandemic days. I want to convey my sincere thanks to my faculty members who gave me a chance to attend the workshop and also guided me in finishing the project. Thank you. Hello, my name is Santi Kad. I am from Nagaland. I am currently pursuing my BTech Civil Engineering second year from TERI, Kurukshetra, Haryana. I take this time to thank Guvi for giving me a platform to learn the Python course and also helping me complete Build a Face Recognition application using Python, which is a part of L4 India. Thank you, Guvi. Hello everyone, this is Nicholas, a BTech Mechanical final year student of Terry College, Kurukshetra. I have done a basic course of Python under the guidance of our teachers and find out that it is a multidisciplinary high-level programming language including structured programming, object-oriented and functional programming. So I encourage you all to learn this programming language as its demand is increasing day by day in our technology like in robotics, machine learning. Thank you. हेलो एवरीवन, आई एम बीतू खान. आई एम फ्रॉम बांग्लादेश. हम टेरी इंजीनियरिंग कॉलेज पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे पढ़ते हैं. टेरी मेरे लिए एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है क्योंकि यहाँ का हर एक टीचर पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं. मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ पाइथन को कि हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ले आने के लिए. एंड हम थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरा ऑल टीचर्स को कि हम लोगों को पाइथन के बारे में बोला. एंड थैंक्स टू टेरी. Hi, my name is Said Hamid Sadat. I am from Afghanistan. I am a BTech first year student in TERI Kurukshetra, Haryana. We started our learning journey through C language from our teachers, wherein we studied variable declaration and various data types. All this helped us to learn that type of Python which was taught in the webinar. We could related the concept very easily, and despite of many unfavorable condition, we are really excited and ready to learn more and more. Great thanks to my teachers and Govi team from provided us such opportunities. Hey everyone, I'm Sakshi from Jammu. I'm currently pursuing my BTech third year from TERI. I would like to thank TERI for introducing us to the platform like Guvi and NPTEL. Thanks Guvi for learning us machine learning, where we learn decision-making algorithms, we learn about libraries, how to import them, how to use them, how to train data and how to test our data. Thank you so much TERI for introducing to the platform like Guvi. Thanks Guvi for helping us to complete face recognition application using Python. Thank you so much. Hello, my name is Saurabh Kumar Sharma from Jharkhand. I study in BTech first year CSC from TERI College, Kurukshetra, Haryana. I am great thankful to TERI College and Guvi to give me this wonderful opportunity to learn about the Python course. And I am great thankful to my teachers to help me about the learning Python course. And by attending a seminar, it is easy to learn about the Python course. It is a wonderful moment in our life. Thank you, Guvi and TERI College. Hello everyone, my name is Arshi Khatun and I am a final year student of Electrical and Electronics Engineering from TERI Kurukshetra. I had recently completed a certification of Python programming on GUVI. The power of Python is remarkable in embedded systems and microcontrollers also. The webinar helps us a lot in learning this language. Hello, my name is Ahuta Kesu from Nagaland. I'm currently in 6th semester pursuing BTech in Civil Engineering from TERI College. I want to thank AICT for giving us a wonderful opportunity to learn the newest technology called Python. Thank you. Hello everyone, my name is Kirti Gaba.
I am assistant professor in Tari College Kurukshetra, as a project is a predominant part of engineering courses, and all of you know that how the technology is changing day by day. So we try our best that student can not only cope up with the new technology but also try to expertise too. And student making the projects by using the languages Python, Flutter, Android and more. Lastly, I want to thanks to Guvi who provide a wonderful opportunity to the students. Thank you. Hello, my name is Vikito Achumi. I'm from Nagaland. I'm currently studying in the first semester at Technology Education and Research Integrated Institution, TERI, Kurukshetra. And I would like to take this time to thank Guvi for their wonderful opportunity and this special privilege that they've given to us to learn Python, and furthermore to use Python for creating facial recognition app. As part of AI for India event, we are truly grateful to you and we feel very. Hi, I am Parul and I work as assistant professor in Teri College Kurukshetra. Students in our college work on various projects in the latest revolutionary and leading edge technology, that is artificial intelligence. Starting from working on various tools like data visualization and web scraping, they do multiple projects on machine learning, and after that they move on to the more advanced level of deep learning projects where CNN is the foundation. And not only this, they are not even restricted to this projects only. They participate in international level competitions on Kaggle, and I'm really thankful to Guvi to give such a great exposure on big applications of data science and artificial intelligence to our students. बड़ा मुश्किल समय है, बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं और हर सेक्टर इस टफ टाइम को, इस अनप्रेसिडेंटेड टाइम को कैसे एड्रेस करा जाए उसके लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने एफर्ट्स कर रहा है। अगर मैं टेरी की बात करूं तो लास्ट ईयर मार्च में जब कोविड ने रेगुलर एंड रूटीन एजुकेशन को हिट किया तो सर्टेनली पहले 2-3 महीने तक बहुत ज्यादा क्लू नहीं था। द फर्स्ट priority was survival of faculty members and survival of our students. उस फर्स्ट पैच को पार करते ही इंस्टीट्यूट ने बहुत रेस्पॉन्सिबली आईसीटी की पावर को समझते हुए सारे प्लेटफॉर्म को यूनाइट करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के फॉर्मेट में गए और इट हैज बीन अ जर्नी देयर आफ्टर. वी कोलैबोरेटेड विद ऑल द लीडिंग national as well as international companies to ensure that our students get the uninterrupted education and uninterrupted learning. इस प्रोसेस में सबसे पहले हमने ग्रेट लर्निंग के साथ कोलैबोरेट किया. इट्स अ वंडरफुल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. उसके थ्रू वी इंश्योर्ड कि हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर चले और इफेक्टिव चले, अटेंडेंस बहुत रेगुलर हो, इवन जो हमारे इंटरनल असेसमेंट्स हैं वो प्रॉक्टर्ड हो. वी इंश्योर्ड एवरीथिंग. उसके बाद हमने अपने एजुकेशन पेडागॉजी को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट किया, ऑनलाइन फॉर्मेट में शिफ्ट किया, ब्लेंडेड फॉर्मेट में शिफ्ट किया, एंड वी रिलाइड मोर ऑन इवेंट्स लाइक हैकाथॉन्स, बूट कैंप्स, रियल लाइफ वर्कशॉप्स. वी रिवाइव्ड टेरी टॉक्स एंड वी ब्रॉट इट इन दी ऑनलाइन फॉर्मेट. तो ये सारे फॉर्मेट चलते रहे. इस प्रोसेस में हमने आई नर्चर के साथ कोलैबोरेट करा, हमने जीटीटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करा, हमने प्रो ट्रेनी के साथ कोलैबोरेट करा, हमने गिटअप के साथ कोलैबोरेट करा, हमने इनक्यूबेट आईएनडी के साथ कोलैबोरेट किया और ये जर्नी अभी कंटिन्यूड है. जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है हम दोनों हाथों से ग्रैब करके अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को पास ऑन कर रहे हैं. मेरे लिए बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट सबसे खुशी की बात यह है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स सब लोग बड़ा प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस चैलेंज को बड़ी शिद्दत से फेस कर रहे हैं. लेटेस्ट अकम्पलिशमेंट्स गुवी के साथ जो एक ऑफिशियल अटेम्प्ट था गिनीज रिकॉर्ड का, उसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया और ये जो आउटकम है कि 177 बच्चे एक फेस रिकॉग्निशन ऐप बनाने में सक्सेसफुल रहे, 300 बच्चों ने पाइथन की ट्रेनिंग रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करी. ये एक क्यूमुलेटिव आउटकम है उन सारी एफर्ट्स का जो ये कॉलेज कलेक्टिवली पिछले 1 साल से ले रहा है. मैं खुश हूं, धन्यवाद और अपना आभार देता हूं अपने सारे बच्चों को, सारे टीचर्स को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को और हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स को कि हम इतने टफ टाइम में इतने अच्छे से चीजों पर रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं. थैंक यू सो वेरी मच.